हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर बहुत से फ़ायदे हासिल कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको हेज फंडिंग के वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हेज फंडिंग क्या है और ये टर्म कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है और इसके पीछे कौन से बेनिफिट्स होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, वर्किंग क्या है, इसका मेथड क्या है, तरीक़ाकार क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है व्हाट आर हेज फंडिंग। तो हेज फंड्स, हेज फंड स्ट्रक्चर और इसी तरह से हेज फंडिंग के हवाले से हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं सीधा चैट जीपीटी के ऊपर जहां से हमने ये सवाल उससे पूछा है। तो उसके जवाब को लाइकली आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। हेज फंडिंग लाइकली रेफर्स टू हेज फंड्स विच आर इन्वेस्टमेंट फंड्स दैट पूल कैपिटल फ्रॉम accredited individuals or institutional investors and use various strategies to earn returns for their investors. These funds are typically open to a limited number of accredited investors and require a significant initial investment. Hedge funds employ a wide range of investment techniques and strategies to generate returns. Some common strategies include long short equity. This involves taking both long buy and short sell position in different assets, aiming to profit from both rising and falling prices. Global macro. This strategy involves making bets on macroeconomic trends and events at a global level, such as changes in interest rates, economic policies, and geopolitical events. Event driven. Hedge funds following these strategies aim to profit from specific events such as migrates and acquisitions, bankruptcies, or other corporate events. Arbitrage. This involves exploiting price difference between related assets or market. Examples include statistical arbitrage, convertible arbitrage, and merge arbitrage. Managed for futures. Hedge funds is the in these categories invest in futures and trading contracts often based on trends in commodity, currency, or financial market. Distract restrictions. These strategies involve investing in the debt or equity of companies that are in financial distress with the expectations of profiting from a टर्न अराउंड। तो इसमें कुछ डिटेल उन्होंने आपके साथ शेयर की है कि हेज फंड कैसे काम करता है, इसका तरीक़ाकार क्या है, बेनिफिट्स क्या है, मेथड क्या है इसका। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।